Hi everyone, welcome back to our YouTube channel RPIT Academy. I Shamli, working as an assistant professor in RPIMS College of Nursing Bistara Kannauj. Today in this video, I'll discuss about the topic postoperative care, which means the care begins when the patient is entered into the post anesthesia unit. ठीक है, जब किसी का सर्जरी हो जाता है तो पेशेंट अगर हम उसको क्या करते हैं सर्जरी के बाद पोस्ट या रिकवरी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसमें जो हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज़ द फेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव केयर। तो जैसे कि हमें पता पेरी ऑपरेटिव में 3 फेजेस आते हैं, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। ठीक है, सो इट इज़ द फेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव केयर दैट बिगन्स एट द पॉइंट व्हेन द पेशेंट enters the PECU post anesthesia care unit until they have recovered sufficiently to transfer from the PECU and the appropriate recovering unit or discharge home। ठीक है, आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं रिकवरी रूम में या सर्जिकल जो रूम है वहाँ पर, उधर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं हमारे। सो फेज 1 इज़ द इमीडिएट पोस्ट एनेस्थीसिया पीरियड when the patient is emerging from anesthesia and require one-on-one care। ठीक है, नेक्स्ट द पेक्यू नर्स असेस द पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेगी, उसके ब्रेथ साउंड चेक करेगी, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर्स, कार्डिक रिदम्स एंड मसल स्ट्रेंथ। सो इसमें नर्स का क्या रोल है, शी विल असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेथ साउंड, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रिदम्स एंड मसल स्ट्रेंथ। ड्यूरिंग दिस फेज द पेशेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांसफर टू फेज 2। ठीक है, इसी फेज में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को फेज 2 में शिफ्ट करने के लिए और ट्रांसफर टू एन आईसीयू और इनपेशेंट नर्सिंग यूनिट में। एंड इन फेज 2 इट इज़ अ कंटिन्यूइंग रिकवरी व्हेन द पेशेंट कॉन्शियसनेस रिटर्न्स टू द वेस्ट लाइन। ठीक है, जब पेशेंट कॉन्शियसनेस आ जाता है उसको बेस लाइन नॉर्मल उसमें आ जाती है एंड द पेशेंट हैज स्टेबल रेस्पिरेटरी, जो हमने असेस कर रहे थे कार्डिक रिदम्स, सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, वो सब क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, रीनल फंक्शनिंग। एंड द पेशेंट मैनी पेशेंट bypass phase 1 and go directly to the OR to the phase 2। द फेज 2 इन अ प्रोसेस नोन एज अ फास्ट ट्रैकिंग फेज भी बोला जाता है इसको। एंड द पेशेंट देन मूव्स टू द फेज 3 होम और एन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज। And in phase 3, it is an ongoing care for the patient needed extended observations and the intervention after phase 1 or 2, such as 24-hour observation unit or an hospital unit. The nursing care continues until the patient completely recovers from anesthesia, surgery, and it is ready for the self-care. Next is interventions. So monitoring vital signs, airway patencies, and neurological status. Monitoring for the possible complications, assessing and managing pain, assessing the surgical sites, assessing and maintaining fluid and electrolyte balance, provide through reports of the patient's status to the receiving nurse and the recovery room, the patient and family. But will the complications of the postoperative respiratory there may be a hypoxemia, aspiration, and laryngospasm. And in cardiac hypertension may go hypertension, and the patient may have some cardiac arrhythmic problems, that is dysarrhythmia, thermoregulatory hypothermia or hypothermia. In gastro there be a nausea and vomiting. And neuro there will be a delay emergence from the anesthesia, issues with circulations and sensation, and delirium and aggression, and additional complications like pain at a surgical site complications, fluid management, and patient safety. So I hope this video helps you. Thank you for watching it.